Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is ecological succession. It is a topic which is related to class 11th US subject, and it belongs to the very second unit, that is ecology. तो आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। तो इस इकोलॉजिकल सक्सेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। ये चीज़ें हम उस पर हम इंटरेक्ट करेंगे। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि हाउ दिस इकोलॉजिकल दिस सक्सेशन इट टेक्स प्लेस। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है। So far as this ecological succession is concerned, basically it refers to the natural development of a series of biotic community. Development or the formation of the series of the biotic community, one after the other in the same area, till a final, terminal, stable and climax community is established. That means in communities, a series of community is formed in this very process. तो ये सिलसिला तब तक चलता है कि जब एक फाइनल, जिसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, वो एस्टैब्लिश होती है। तो उस तक जो ये सक्सेशन होती है, ये फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरियस बायोटिक कम्युनिटीज होते हैं, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे। जो अब ये फाइनल, इसमें जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है या फाइनल कम्युनिटी, जो बायोटिक कम्युनिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश होती है, दिस इज बेसिकली दिस shows the better adaptations with the prevailing conditions in that very area, जहाँ पे ये पूरी प्रोसेस होती है, जिस एरिया में ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे इस इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान थ्री टाइप्स ऑफ द फोर्सेस ऑपरेट। थ्री टाइप्स ऑफ द फोर्सेस। वन इज नोन एज द biotic force, another is known as physico-chemical forces, and there are geographic forces. These are the three categories of forces which operates during the process of this ecological succession. अब हम देखेंगे कि कहाँ पे ये biological succession, this biotic succession or the ecological succession, ये कहाँ पे होती है। Basically it takes place in that very area, in that very region where the plants do not normally grow due to the absence of the soil, or the animals are not able to survive due to the absence of food and shelter. तो उसी इन्हीं जगहों पे ये होती है। तो यहाँ पे जो पहली कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी एस्टैब्लिश होती है, या जो पहली वाली कम्युनिटी होती है, इसको हम कहते हैं पायनियर कम्युनिटीज। यानी कि थ्री कैटेगरीज ऑफ कम्युनिटीज गेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन एट दैट वेरी एरिया वेयर इट टेक्स प्लेस। वन इज नोन एज द पायनियर कम्युनिटी। दूसरी जो होते हैं, इसको कहते हैं सीरल कम्युनिटीज। और जो तीसरा इसमें बनता है, दैट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। So far as this pioneer community is concerned, it is the firstly formed biotic community in that very region, in that very bare region, bare area. तो इसमें क्या होते हैं, during this very pioneer community, there occurs the soil formation. Slowly there takes the formation of the soil, and apart from that there is very little biodiversity. So this is happening during this pioneer communities, and it is followed by a series of transitional communities, or which are known as the serial communities. During these communities, basically there occurs the increase in the biotic diversity, uh,
तो इन कम्युनिटीज में बायोटिक डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स दे गेट्स एस्टैब्लिश्ड और दे ऑपरेट्स during these very सीरल these communities, that is सीरल communities। तो इसके बाद जो फाइनल कम्युनिटी यहाँ पे बनती है जिसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। This is the final stable terminal community, and this is that very community. It is well adopted it is better adopted with the prevailing conditions in that very particular area, and it exists it exists in equilibrium with the climatic as well as the edaphic factors in that very region। तो इसको हम कहेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो पहले हम देखेंगे these are the three types of communities which are formed during the process of this ecological succession। तो इस दौरान ये तीन कैटेगरीज ऑफ कम्युनिटीज एस्टैब्लिश होती हैं और फॉर्मेशन इनकी मतलब फॉर्मेशन होती है। तो पहले हम इसको देखेंगे कि एक यहाँ पे एक टर्म यूज होती है उसको हम कहते हैं सियर। सियर किसको कहते हैं? SER। व्हाट आर सियर्स और व्हाट इज सियर? Basically the whole sequence of events which are taking place during the biotic succession or during the ecological succession, जितनी भी sequence of steps होते हैं, कितनी भी इसमें मतलब इसमें events involve होते हैं, they constitute what we call the shears। And there are various types of the shears, like there is zero shear, XER or zero shear। Zero shear हम किसको कहेंगे? It is that shear here the ecological succession takes place in the dry place, in the dry regions, in the dry areas rather। तो यहाँ पे ecological succession dry areas में होती है, dry regions में होती है। तो इस तरह there is another which is known as the lithosphere। lithosphere कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे ecological succession takes place in the on the bare stones, bare rocks, यहाँ पे ये होती है। इसी तरह there is another category of this very shear, these are known as the Psammosear, Psammosear। Psammosear, it is here the ecological succession occurs or it takes place on the sand। And likewise there is another type of this shear which is known as hydrosear। Hydrosear is that very shear where the ecological succession takes place in water। तो these are the various categories of these shears। Basically now तो shear क्या होता है? This sample it represents the whole sequence of the events which are taking place during the process of the ecological succession। And now we will try to understand the various characteristic features of this very ecological ecological succession। what are its various characteristic features? तो पहला characteristic feature जो इस ecological succession का होता है, that is here occurs the transition। here occurs transition from aquatic or arid environment to the mesic environment। Arid, aquatic you know, and arid, that is the desert contain the environment where the deserts are the present। तो इसी तरह हम बात करेंगे जो म्यूजिक इन्वायरमेंट होता है, these are those environment where all the conditions are present in their optimum levels, in their suitable levels। तो यहाँ पे ये transition होती है from aquatic or the arid conditions to the very these music conditions। जो पहला कैरेक्टर इसका है। जो इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन। यहाँ इसका एक कैरेक्टर यह है कि फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल एंड देयर इज बेसिकली द differentiation and thickening of the soil। it is another characteristic feature of this ecological succession। जो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज यहाँ पे जो ह्यूमस कंटेंट, देयर इज इंक्रीज्ड ह्यूमस कंटेंट, मतलब ह्यूमस कंटेंट दैट इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग दिस ecological succession। यहाँ पे जो ह्यूमस कंटेंट है वो बढ़ जाता है।
humus, you know, these are basically the organic dead matter which are formed from the fallen twigs and leaves of the trees, which when fallen and they get mixed or they fall on the soil, where they form this humus, and it is very very rich in its organic content. So it is highly fertile, this humus. तो यहाँ पे humus content बढ़ जाता है. And apart from that, another characteristic there is increase in biomass content. Biomass की concentration जो है, that also gets increased. This is another characteristic feature of this ecological succession. तो इसी तरह अगर हम देखेंगे इसका एक और करेक्टर, तो यहाँ पे ट्रांजिशन होती है फ्रॉम द शॉर्ट लीव्ड प्लांट्स टू द लॉन्ग लीव्ड प्लांट्स. इसी तरह एक और कैरेक्टर इसका ये है, यहाँ पे ट्रांजिशन होती है फ्रॉम द स्मॉल साइजेड प्लांट्स टू द लार्ज साइजेड. यानी कि पहले छोटे छोटे प्लांट्स होता है, फिर वहां से उनसे क्या मतलब वहां से ट्रांजिशन होते हैं और वहां पे क्या बनते हैं, लार्ज प्लांट्स, big plants are formed. This is another characteristic feature of this very ecological succession. तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ट्रांजिशन होती है फ्रॉम द अनस्टेबल biotic communities to the stable biotic community. यानी कि अनस्टेबल बायोटिक कम्युनिटी से, जैसे कि हम पाइनियर कम्युनिटीज देखते हैं या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज और सीरल कम्युनिटीज देखते हैं, दे आर वेरी अनस्टेबल. वहां से उन कम्युनिटीज से ट्रांजिशन होते हैं टुवर्ड्स द वेरी स्टेबल कम्युनिटीज, दैट इज टुवर्ड्स द climax communities. So this is another characteristic feature of this biological of this ecological succession, or sometimes it is also known as the biotic succession. तो एक और characteristic, there is transition from the less biodiversity to the हाई बायोडाइवर्सिटी. यानी कि पहले पहले biodiversity, the diversity of the living flora and fauna, it is very less initially, but there occurs the transition with the passage of the time, with the succession, there occurs the increase in the biodiversity during this process of ecological succession. It is another characteristic feature of this ecological succession. तो यहाँ पे क्या होता है, increased niche specialization. What is meant by the niche specialization? Basically, niche specialization, it is a process, or it refers when the organisms, they are better adjusted, they are better adapted to the conditions which are prevalent in a particular habitat. उसको हम कहेंगे niche specialization. And this niche specialization, it also gets increased during the process of ecological succession, and it is another characteristic feature of this ecological succession. हाँ, development of stratification. यहाँ पे ecological succession के दौरान यहाँ पे मतलब these stratification takes place. That means layered vegetation is formed. This depends upon the depending upon the size, so depending also upon the height, various categories of these vegetations are formed, various layers of the vegetation are formed, which we call the ecological stratification. That is another important this characteristic feature of the ecological succession. तो इस तरह क्या होता है, तो एक और, हाँ, यहाँ पे एक ट्रांजिशन होती है फ्रॉम सैंपल फूड चेन्स टू कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स, एंड दिस इन टर्न, these food chains, they in turn leads to the formation of the food webs during the process of this ecological succession. And these were the various characteristics of this ecological succession. Now the question arises, how this process of ecological succession takes place. ये कैसे होते हैं ecological succession, इसके अंदर कौन कौन से steps involve होते हैं, what are the various steps, what are the various sequence of the steps which are involved during the process of this ecological succession. Basically, the steps which are involved during this ecological succession, these are 7 in number. One is known as nudation.
न्यूडेशन में क्या होती है, बेसिकली इट इज दैट वेरी प्रोसेस, इट इज दैट वेरी स्टेप during which the barren or during which the bare areas are created. Now the question arises, how these bare areas are created? These are created by the various natural agencies like wind, water, like these uh, catastrophes, earthquakes, volcanic eruptions, floods, and sometimes they may also be due to the human activities. This nudation, it will be also caused by the human activities. तो इसमें दूसरा स्टेप इन्वॉल्व होता है, जो दूसरी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है, दैट इज known as the invasion and dispersal. Invasion and dispersal, and dispersion and dispersal हम कहेंगे. अब जो ये नरेशन के दौरान जो ये ब्लेयर एरिया क्रिएट हुआ, यहाँ पे अब फर्स्ट सेटलर्स दे गेट इन्वेडेड इनटू दिस बियर एरिया. कैसे? इधर थ्रू द abiotic methods like wind and water, or through the biotic methods, that is they are carried along the bodies of the animals. And this basically this transportation of these settlers, like these spores or propagules, or these seeds, this their transportation by various carriers, this is known as migration. Sometimes इसको हम माइग्रेशन भी कहते हैं. अब पहला स्टेप जो इनंडेशन, इसके दौरान बेरन एरियाज क्रिएट होते हैं. दूसरे स्टेप के दौरान जो पहले सेटलर्स वो इन्वेड होते हैं. तो इस तरह तीसरे स्टेप जो होता है उसके दौरान क्या होता है, उसके दौरान होता है एस्टैब्लिशमेंट, और इसको एक और टेक्निकल टर्म है एक्सेसिस, इसको एक्सेसिस भी कहते हैं. अब जो ये इन्वेडर्स हैं या जो पहले ये सेटलर्स हैं, मतलब जो ये पहले सेटल होते हैं, ये स्पीशीज या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, it is now important for them to grow, to reproduce and establish themselves for the successful ecological succession. It is very important now. अब तो ये जो मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, ये अपने आप को वहाँ पे मतलब एस्टैब्लिश करते हैं. तो एस्टैब्लिश के दौरान, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्सेस, दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्सेसिस. तो इसके बाद अब जो ये एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनिजम्स होता है, इनका क्या होता है, एक इसके बाद एक और प्रोसेस और एक और स्टेप दैट इज फॉलोड. द नेक्स्ट स्टेप हियर इज देन, दिस इज नोन एज एग्रीगेशन. देखो एग्रीगेशन के दौरान क्या होता है, जो ये एस्टैब्लिश्ड स्पीशीज होते हैं और these organisms, now they increase their number, ये अपनी तादाद को बिल्कुल बढ़ाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. जब ये रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी नंबर को, अपनी फिगर को इनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उससे क्या होता है, they get close to each other, they get close to each other. That is known as, when they come together, this is known as the aggregation. This is the next step or next process which is involved during the ecological succession. The next step which is followed, that is known as the competition and coaction. Competition and coaction. Competition and coaction. अब जो ये एग्रीगेटेड स्पीशीज हैं, एग्रीगेशन, द एग्रीगेशन जो होती है, इट ट्रिगर्स और इट जस्ट इनिशिएट्स और इट जस्ट स्टार्ट्स
the phenomena of competition, both interspecific competition as well as the intraspecific competition among the organisms of different species, competition for food, competition for space, competition for nutrition. And apart from these various types of the intraspecific or the interspecific interactions, they may lead to the change, various changes in different organisms, and this is known as coaction. कंपटीशन के बाद कोएक्शन होते हैं जिस दौरान ये इंटरस्पेसिफिक या इंट्रास्पेसिफिक जो होती है ना ये मतलब इंटरेक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं कोएक्शन। तो इस कोएक्शन के बाद जो ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स दे सर्वाइव which are able to compete in a very efficient way, and those organisms which are unable to compete, they get discarded in this very step during this very process, and only those organisms survive or proceed ahead along the succession which show better adaptations, which show efficient change, and they get naturally selected here. Almost these depends upon various factors। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उनमें क्या क्या मतलब कौन कौन से मतलब करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको यहाँ पे कंपटीशन में यहाँ पे सर्वाइव करवाते हैं या यहाँ पे कंपटीशन में वो रहते हैं, अदर्स गेट डिस्कार्डेड। तो उसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे मतलब हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होनी चाहिए ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑर्गेनिज्म के पास हाई स्पोर फॉर्मेशन कैपेसिटी उसके पास होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ स्पोर्स वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह तो ये इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, एफिशिएंट इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड्स उसके पास होनी चाहिए। तो दीज आर द वेरियस फीचर्स which enables an organism to survive, and the rest of the organisms which are unable to compete, they get discarded from this competition। तो इस तरह जो इसका सिक्स्थ स्टेप है दैट इज रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है, this the living organisms reciprocally influence and get influenced by the environment। इसका मतलब यह हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है they are influenced by the environment, and apart from that they are influenced by the environment, and they also influence the environment। That means they reciprocally influence one another environment and these organisms, which we call the reaction। And this reaction, it may lead to the modification of the environment, it changes the temperature, light, and other conditions of the environment, therefore it may lead to the modification of the environment, may change the environment, and this change in environment, it may lead to the formation, it may lead to the creation of the several seral community, biotic communities, or what we call the these transitional communities। तो इसके बाद लास्ट स्टेप होता है इसके अंदर which is called the stabilization। And stabilization, it is the ultimate step, it's the last step which is involved during the process of the ecological succession। And during the stabilization, what we get stabilized, we get a stabilized self-perpetuating community, what we call the climax community। It is a stable, it is self-perpetuating, and it is well adapted with the climatic, both edaphic as well as the climatic conditions of that very area in that very region। And apart from that, it remains in harmony and in equilibrium with the edaphic as well as the climatic condition in that very region। So it may lead to the establishment, or it may lead to the formation or establishment of this climax community। And this was the sequence of the processes or sequence of the steps which are involved during the process of ecological succession। And this is
all about today. Inshallah, in the next topics, we will discuss a little bit about the types of the ecological succession, and apart from that, we will also just quote some example regarding the zero shares, lithospheres, and the hydrospheres. Till then, Allah Hafiz, fi amanillah.